दोस्तों मैं हूं आज राजीव यहाँ वॉशिंगटन डीसी के सुनो ऑडियो के स्टूडियो से आपका स्वागत है और लेके आ गया हूं एक और एपिसोड ऑफ दिल से विद आरजे राजीव एंड आरजे रितु। हमारे दिल से आपके दिल तक। जी हाँ, मैं अभी अकेला हूं स्क्रीन पे और रितु मुझे बहुत जल्दी ज्वाइन करेगी यहाँ पे। और आज जब हम बातें शुरू करते हैं, आज की जो बातें होंगी वो हम हेल्थ टॉपिक पे लेके आए हैं आपके लिए। आयुर्वेदा हेल्थ के बारे में लेके आए हैं। और जो हमारी गेस्ट हैं आज के प्रोग्राम में, शी इज डॉक्टर, शी कॉल्स हरसेल्फ एज वैद्य, अर्चना वर्धन। तो उनको लेके आएंगे, उनसे बातें करेंगे हम हेल्थ के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में, गट हेल्थ के बारे में। पर उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ हैप्पीनेस के बारे में, खुशी के बारे में, पॉजिटिविटी के बारे में। और जैसा कि मैं हर शो से पहले करता हूँ, या कुछ कहानी लेके आता हूँ या कुछ ज्ञान लेके आता हूँ। और एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा भी होता है कि मैं भी कई इमोशनल कोस्टर राइड से गुजरता रहता हूँ। और जब भी मैं उस इमोशनल कोस्टर राइड से गुजरता हूँ, कोई बात होती है, कोई कुछ मुझे कह देता है जिसके कारण मुझे दुख होता है, तो मैं अपने अंदर जाता हूँ और सोचता हूँ कि आज राजीव मेरे को क्या कहेगा। बाबा राजीव जो पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस की बातें करता रहता है, वो मुझे क्या कहेगा अगर उसके पास जाके मैं ये कहूँ कि हाय, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे दुख हो रहा है, मेरे इमोशंस ऐसे उतार चढ़ाव से निकल रहे हैं, तो आरजे राजीव मुझे क्या कहेगा। और जब मैं आरजे राजीव से मिलता हूँ, उससे बातें करता हूँ, खुद से बातें करता हूँ, उसका रेजोल्यूशन देखता हूँ, तो उस रेजोल्यूशन से अपने उस इमोशनल रोलर कोस्टर राइड से बाहर आ जाता हूँ। तो एक तरह से अच्छा तरीका है मेरा। हर इंसान इमोशनल रोलर कोस्टर राइड से निकलता ही निकलता है, पर अगर अपने अंदर से ही कोई आंसर मिलने शुरू हो जाए, उनके जो आपके चैलेंजेस हैं अपने अंदर से ही उसके आंसर्स मिल जाएं, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो आज मैं जो आपके लिए छोटी-छोटी बातें लेके आया हूँ, वो हैं हाउ टू लर्न टू बी हैप्पियर। और मैंने सुना है कि, और ये जो स्निपेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये मेरी दोस्त माला श्रॉफ ने मेरे साथ शेयर की थी, तो वो मैंने सँभाल के रख ली थी अपने पास और मैंने सोचा आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सुना है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक कोर्स है हाउ टू लर्न टू बी हैप्पियर। ये पॉजिटिव साइकोलॉजी की क्लास जो बेन शहर पढ़ाते हैं, it attracts 1400 plus students and almost 20% of the Harvard University graduates take this as an elective course. और इसमें ये 35 ईयर ओल्ड प्रोफेसर जो हैं, उन्होंने 14 टिप्स दिए हैं हाउ टू बी हैप्पियर। मैं सारे के सारे 14 टिप्स से तो नहीं गुजरूंगा, पर कुछ टिप्स को मैं आपके साथ लेके आके शेयर करता हूं। और कई इनमें से ये ऐसे भी टिप हैं जो मेरी होस्ट आरजे रितु भी बहुत रिलेट करेगी उसके साथ, और उसकी खुशी के कारण भी कई ऐसे टिप्स हैं। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं आरजे रितु को स्टेज पे ले आता हूँ, हमारे शो में ले आता हूँ, उसका स्वागत करते हैं और फिर मैं वो सारे टिप्स, कुछ टिप्स जो हैं 14 टिप्स में से कुछ जो टिप्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं रितु को इसलिए भी लेके आ रहा हूँ क्योंकि कई ऐसे टिप्स हैं इसमें जो रितु इमीडिएटली रेजोनेट करेगी उसके साथ। तो बुलाते हैं रितु को हमारे शो पे। हेलो हाय राजीव। और मेरे को तो बैक स्टेज ही सुनना बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हैप्पीनेस की बातें हो रही थी। तो सभी लोग जो हमारा शो देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, प्यार करते हैं, सबसे पहले उनको हेलो कहना चाहूंगी। और आज का शो तो वैसे भी हैप्पीनेस और भी बहुत कुछ होने वाला है, अर्चना आने वाली है, तो लेट्स स्टार्ट द शो। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, क्या बताने वाले हो तुम खुशियों के बारे में कि किस तरीके से हम खुशियां क्रिएट कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो मेरे को ना ये प्राइवेसी चेंज करने दो इसमें फटाफट, हाँ, ताकि तो तुम प्राइवेसी चेंज करो। तो मैं बता दूं अपने हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कि आज के शो में आने वाली है अर्चना। शी इज आयुर्वेदिक डॉक्टर और काफी साल उन्होंने इंडिया में प्रैक्टिस की है। तो हमने सोचा क्यों ना, अभी कोरोना अभी भी चल रहा है और स्प्रिंग आ रहा है, तो क्यों ना हम ऐसी आज उनसे जानकारी लें जिससे कि हमारी जो इम्यूनिटी है, गट हेल्थ है, उसका क्या लिंक है और किस तरीके से हम अपने आप को और स्ट्रांग और दुरुस्त बना सकते हैं। तो आएंगी वो भी। तो उससे पहले राजीव जरा सेटिंग्स चेंज करें और शो को आगे बढ़ाए क्योंकि हो गया, सेटिंग मीटिंग चेंज हो गई। चित्रा, थैंक यू सो मच। वी आर आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड एंड थैंक फॉर योर सपोर्ट ऑल द टाइम। और अमिशी तुम्हें हेलो बोल रही है। हाय हाय रितु, अमिशी। और लंबा रितु हेलो। एकदम। हाय अमिशी। तो रितु, ये 14 टिप्स जो थे, मैं जो बात कर रहा था उसमें से कुछ टिप्स मैं शेयर करता हूं और तुम उसके साथ भी रेजोनेट करोगी। पहला टिप है, और जो उसमें से मैंने कुछ हाईलाइट किए हैं, थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग यू हैव। बिल्कुल। Write down 10 things you have in your life that give you happiness.
फोकस ऑन द गुड थिंग्स, बिकॉज जिंदगी में हर एक के पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो उसे खुश करता है, और हम हमेशा उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है. बट इफ यू मेक लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव दैट मेक्स यू हैप्पी, you will realize how much you have in your life. बिल्कुल राजीव, देखो हम सब अफेक्ट होते हैं और हाँ, मेरे में ये अच्छी बात आदत तो है, मैं हर रोज भगवान को शुक्र करती हूँ सोने से पहले। वो मम्मी ने सिखाई थी कि फॉर एवरीथिंग, आई एम ए वेरी कॉन्टेंट पर्सन, बट जैसा तुमने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि कभी कभी हम अफेक्ट हो जाते हैं कि हम कुछ ना कर रहे होते हैं ऐसा, और लोग हमें कोई ऐसी बात कह जाते हैं। तो उस वक्त में ऐसे कल ही मेरे साथ एक छोटा सा ऐसा इंसिडेंट हुआ था, आई गॉट लिटिल पर्टर्ब्ड। तो लेकिन उस वक्त ना मैं उन लोगों के बारे में सोचती हूँ जो मुझे समझते हैं और जो मुझे अंदर तक जानते हैं। तो ऑफ कोर्स आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, सबसे पहले तो वैशाली है, तो आई ऑलवेज कॉल हर एंड शी ऑलवेज कंफर्ट्स मी लाइक दिस, एंड उसके बाद मैं ठीक हो जाती हूँ। तो हाँ, अफेक्ट होते हैं पर उसको जल्दी निकाल देना चाहिए, किसी ऐसे इंसान से बात कर लेनी चाहिए जो आपको सही एडवाइस दे और आपको बताए कि नहीं, मैटर नहीं करती हैं ये बातें और किसी और का कहा हुआ जो आप हो नहीं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि कई बार होता है कोई कुछ कह देता है, या घर के कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं, या जिंदगी के इंसिडेंट्स हो जाते हैं, जिसके कारण हम सोचने लगते हैं यार हमने क्या किया है जिंदगी में, क्या अचीव किया है. और अगर हम 10 चीजों की ये लिस्ट बनाएं जो हमने अचीव की हैं, या हमारे हर रोज की जिंदगी में हमें खुशियां लाके दे रही हैं, बिल्कुल। तो हमें समझ आता है हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत है, हाँ, एज कम्पेयर टू पीपल हु डोंट हैव एनीथिंग. बिल्कुल। और सबसे जो मुझे लगता है हमें सबसे जरूरी जो लोग हैं, जैसे तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे बच्चे हैं, अंकल हैं, आंटी हैं, और लीना तुम्हारी वाइफ है इतनी सपोर्टिंग। तो ऐसे वक्त में सोचना चाहिए कि मतलब मैं ये नहीं कहती सबके, कईयों के घरों में भी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, तो जो लोग हैं हमारे लिए, हमें उनकी तरफ देख के कहना चाहिए चलो, सबको सब कुछ नहीं मिलता है तो तो हमें अच्छी चीजें जो हैं हमारे साथ, हमें उनको देख के। और हाँ, और ये मैं बता दूं कि लाइफ ना किसी की भी परफेक्ट नहीं है, दिखती है लोगों की, हर एक के कुछ अनजाने अनदिखाए दुख होते हैं। तो हमें एक तो अगर कोई खुश हो रहा है या आपको किसी की कोई बात गलत भी लग रही है, तो हमें ये सोच लेना चाहिए पता नहीं, दैट पर्सन माइट बी गोइंग थ्रू समथिंग। एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो दूसरा टिप है प्रैक्टिस फिजिकल एक्टिविटी, जो आज के हमारे टॉपिक से रिलेट होगा, तो उसके बारे में मैं एंड में आता हूँ. बिल्कुल तीसरी बिल्कुल। वाली थी जो आई सेड आई वाज गोइंग टू रेजोनेट विद मेनी ऑफ द थिंग्स विद यू. हेलो राजीव एंड रितु फ्रॉम ये शमा. या हियर इज माय अनदर सोलमेट फ्रॉम पाकिस्तान, बट पता नहीं पिछले हाय. जन्म में मेरी बहन थी ये। हाय शमशा, हाउ आर यू? ओ, रितु, यू मतलब लुकिंग. फेसबुक यूजर बोल रहा है, कोई नाम चेहरा तो होता आपका कि मुझे आई पता थिंक वो चलता। प्राइवेसी के कारण कुछ हुआ होगा इसीलिए. माला इज सेइंग हाय हाय राजीव माला। एंड माला, और थैंक यू सच सो में मच. बताऊं, पिछले एक साल में मैं माला को जानती नहीं हूँ, मुझे ये भी नहीं पता ये कौन है, मतलब इनकी मतलब क्या करती हैं, लेकिन इनकी जो वाइब्स हैं उन्होंने मुझे इतनी पॉजिटिविटी दी है वाइल गोइंग थ्रू अभी कोरोना, या उससे पहले की भी। मैं ड्रामा क्वीन, तो मैं सब कुछ शेयर करती रहती हूँ। तो थैंक यू माला, थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी एंड नॉट फॉर अस। मैंने भी देखा पीछे संगीता वाला शो था, और उसके बाद ये भी संगीता को भी कितना सपोर्ट कर रही है। पता नहीं ऐसे लोग कहाँ से आते हैं जो इतने सारे लोगों को इतना सपोर्ट करते हैं। नहीं तो आज के तो सब एक दूसरे को देख के जल ही रहे होते हैं। हमारा शो भी आता है तो कुछ लोग तो जान के नहीं देखते, छोड़ो यार हम इनके व्यूज क्यों बढ़ाएं, एंड ऑल दैट। नहीं, सच्ची में कई लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे हम कभी मिले नहीं हैं, कोई दिव्या, खास या दिव्या बातचीत. है, अमीशी है, और हाँ. मतलब नाम किसी का भूल जाऊं तो प्लीज बुरा मत मानना, बट यू नो इन योर हार्ट कि आप लोग कौन हो। इवन प्रीति, Right. Yeah, Preeti, Tanya, तान्या। so many people who support us, who we have never met in person, but the vibes connect us, are वाइब्स मैटर, awesome. वाइब्स मैटर। Yeah. तो ये जो अगला टिप है तुम्हारे लिए और हम सबके लिए, बट तुम्हारे से रेजोनेट करता है, मेरे से रेजोनेट करता है. आई रियली रेजोनेट विद दिस. Put nice memories, phrases, and photos of your loved ones. Fill your fridge, your computer, your desk, your Facebook pages, your room, your life with beautiful memories. बिल्कुल, या तो बिल्कुल। इकट्ठी या करते रहो, याद करते रहो वो मेमोरीज को. जब हम फोटोज में देखते हैं, फेसबुक की मेमोरीज भी जब आती हैं, तो इतनी खुशी होती है याद करके कि कभी हम वहां बिल्कुल, गए पिछले साल की मेमोरीज आती हैं, या फिर देखो हमने वो रेडियो का वक्त जो साथ गुजारा था, अब हमें कभी भी हम वो मुझे नहीं लगता किसी रेडियो स्टेशन में हम जाके काम कर पाएंगे, लेकिन वो जो उस वक्त की मेमोरीज आती हैं, उस वक्त के जो लोग थे हमारे साथ, तो उनको देखना कितना अच्छा लगता है।
राइट, एग्जैक्टली। सो चित्रा इज सेइंग रितु तुम्हारे फैंस हैं। रितु इज लुकिंग ब्यूटीफुल, थैंक्स राइट। चित्रा, और चित्रा का भी नाम लेना मैं भूल गई। थैंक गॉड शी लिव्स इन अवर एरिया, तो मैं कभी उनसे मिल पाऊंगी। हाँ, मैं तो मिला हुआ हूँ उनसे, एंड आई ऑलवेज रियली थैंक ऑल ऑफ देम फॉर द लव एंड सपोर्ट दैट दे हैव प्रोवाइडेड। हमारी जब गुफ्तगू शुरू होती है एंड दे जॉइन अस, तो ऐसा लगता है हम अपने फैमिली रूम में बैठ के लोगों से बातें कर रहे हैं और सबके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ, नहीं सच में बोल रही हूँ राजीव, ये ना जो जेलसी है ना, और दूसरों की खुशी से दुखी होना, ये इतना प्रिवेलेंट हो चुका है। तो ऐसे में ऐसे लोगों को देखना कि जो हर एक इंसान के लिए अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, टू हैव दैट काइंड ऑफ पॉजिटिविटी, मुझ में भी नहीं है उतनी। बट फॉर पीपल लाइक दीज, ये चित्रा भी है उनमें से, तो दे आर, इट्स इंस्पिरेशन, वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो वेल मेनी सेड मेमोरीज मैला। जो परफेक्ट जा रही हैं। और जो टिप, नेक्स्ट टिप है, उस वो है, लिसन टू म्यूजिक, प्रेज गॉड। It is proven that listening to music awakens you to sing. This will make your life happy. बिल्कुल और संगीत तो हम लोग का या तो सुने या गाएं, जैसे भी हैं, ट्रेंड हैं या नहीं हैं, परंतु जब गाने सुनते हैं, कई गानों के हमारे जिंदगी से जो मतलब जुड़े होते हैं, कनेक्ट होते हैं, लिरिक्स कनेक्ट होते हैं कई बार, तो बिल्कुल सुनते सुनते काइंड ऑफ थिंग, हैप्पी मोमेंट, सैड मोमेंट्स, जॉयस मेमोरीज, ट्रैवल, हर एक के साथ संगीत कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। बिल्कुल, हर एक मूड के साथ एक गाना होता है। मैं तो पूरा दिन हमारे घर में म्यूजिक चलता है। मैं कोई भी काम साथ में म्यूजिक के, हमारे दो स्पीकर है, एक बेडरूम और एक किचन। तो अगर मैं किचन में जाती हूँ तो वहां का ऑन हो जाता है और वहां का होता है, और मैं फिर बोलती भी हूँ सुनील को कि आज मेरा मूड गजल सुनने का है, अभी पार्टी नंबर्स चला दो, अभी सूफी गाने सुनने हैं मुझे। तो ही विल ऑलवेज प्ले, पूरी उसने यूट्यूब से कनेक्ट कर देता है। और हमारा कनेक्शन भी तो म्यूजिक के कारण ही हुआ है, ऋतु। हाँ, म्यूजिक तो है, ऑफ कोर्स दिल से कनेक्शन है। आरजेस तो बहुत थे, अब कितने लोगों के टच में हूँ, अभी नहीं हूँ, इट्स जस्ट ओनली यू। आई मीन, दिल का कनेक्शन ज्यादा था उस म्यूजिक के कनेक्शन से। एग्जैक्टली, बट शुरुआत तो वहीं से हुई थी, हाँ, रेडियो से मतलब ही थी। शुरुआत वहां से हुई ये थी, क्या। बट जो है वो अलग ही चीज के साथ है। मतलब मैं तो देखो जो बोलती हूँ सच बोल रही हूँ, मतलब दिल से। And then the next one is, and the second last is, take care of yourself and feel attractive. बिल्कुल, मैंने तो पिछले 2 साल में यही काम किया है, मतलब कोरोना में, कि मेरा माइंड ने जो भी किया, लेकिन मैंने अपनी सब चीजों पे, इवन अभी ये कोविड में भी लोग कमजोर हो जाते हैं, मैंने कहा नहीं, मैं इस कोविड से भी और स्ट्रांगर और बेटर होके निकलूंगी। मतलब आई एम फीलिंग मच बेटर देन आई वाज बिफोर द कोविड। Right, exactly. That pride in ourselves, right? It says 70% of the people say they feel happier when they think they look good. बिल्कुल, और मैं घर में भी पहन लेती हूँ नए कपड़े। लोग सोचते हैं पागल है क्या, घर में नए कपड़े पहन के घूमती रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है सुंदर दिखना, नए नए प्रोडक्ट्स ट्राई करती हूँ, हेल्दी एक्सरसाइजेज करती हूँ। क्यों नहीं भाई, एक जिंदगी मिली है, वी हैव टू लुक Exactly. गुड। जो है हम उसका बेटर होने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूँ, एंड ऑल्सो आई एम काइंड ऑफ पुटिंग advertisement for my next play that is coming up. ओके It's called Three Sisters. It's happening on April 9th and 10th ओके। at Jewish Community Center. और पहले जसलीन हेलो बोल रही हाय है। हाय जसलीन। जसलीन, मेरी बहना जसलीन। हाँ, मेरी दोस्त बहन, मेरी भी बहन है। मेरी तो पता नहीं कौन से वाली एक हमारे फादर्स की बनाई हुई सिस्टर है ये। Yeah, Chima and Jasleen are, my beautiful sisters. Hello to both. Thank you so much, Jasleen. और तो मैं प्ले के बारे में बातें कर रहा था, तो उस प्ले की आजकल रिहर्सल्स चल रही हैं, ओके तो थर्सडे को, संडे को रिहर्सल्स होती है। तो लास्ट संडे को आई, लाइक एवरी टाइम व्हेन आई गो देयर, आई एम वेल ड्रेस्ड, अपनी तरफ से मैं वेल ड्रेस होके जाता हूँ, लाइक इन द सेंस आई लुक नीट, क्लीन एंड एवरीथिंग। अच्छा, उस तो दिन जिस दिन तुमने व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स हाँ, पहनी हाँ, थी। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो व्हाइट शर्ट एंड जीन्स में गया था, तो वहाँ पे एक दोस्त ने मेरे को कहा कि यार हम लोग तो ऐसे ही टी-शर्ट विशर्ट कुछ भी डाल के आ जाते हैं, एवरी टाइम यू कम यू लुक सो इमैक्युलेट, लाइक आर यू गोइंग एनीवेयर आफ्टर दिस? आई सेड नो, आई जस्ट केम हियर, यहाँ आया हूँ, यहाँ दोस्तों से मिल रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। आई लव टू put on good clothes, what I feel good and what makes me feel good. So I totally resonate with that point, that making yourself look good gives you बिल्कुल। internal happiness and reflects happiness for other people also.
या मैं ऐसी पहले नहीं थी, आज से मतलब कुछ साल पहले। इवन मेरा बेटा और सुनील भी मुझे कहते थे, मम्मी बाहर जा रहे हैं, कुछ ढंग के कपड़े पहन लो, व्हाट आर यू वेयरिंग, मतलब ये। लेकिन मतलब पिछले कुछ सालों में मतलब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, खास करके या तो उम्र का तकाजा लगा लो कि भाई अब जा रहा है टाइम, तो ठीक से पहन पान लो। अब तो मैं कॉस्को भी जाती हूँ, जिम भी जाती हूँ, तो ऑलवेज लाइक ट्राई टू बी एट माई बेस्ट। शायद इस कंट्री का असर लगा लो, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को देखते हो कि दे आर ऑलवेज वेल ड्रेस्ड व्हेन दे गो आउट। Right. Look at like what Chitra is saying. Me too. I put on lipstick even when I'm at home. Many बिल्कुल। wonder why, but it's for myself. या तुम हो, तुम्हारे बच्चे देखते हैं, भाई साहब देखते हैं। Exactly, exactly. And it gives you internal happiness. Yeah, मुझे तो बहुत खुशी होती है उससे. हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल To be dressed up and looking good. और जो लास्ट वाला पॉइंट था जो कह रहे थे, practice physical activity. बिल्कुल Experts say exercising helps improve mood. 30 minutes of exercise is the best antidote against sadness and stress. बिल्कुल। So, या मैं हर रोज जिम जा रही हूँ आजकल, 1 घंटे की डांस क्लास करती हूँ। तो पूरे दिन के जो थॉट्स होते हैं नेगेटिव वाले खास करके, तो मैं उनको एक्सरसाइज करते हुए प्रोसेस करती हूँ। एंड एट द एंड ऑफ द क्लास ना, मतलब ऑफ कोर्स मैंने अपनी काफी सारी इमोशंस के ऊपर काम कर लिया होता है। और एक सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है, जब हम जिम विम जाते हैं तो वहां पे हम लोगों को मिलते हैं, खास करके स्ट्रेंजर्स से जो हमको जानते भी नहीं है, तो to have those vibes, giving to strangers or getting those vibes from them or interacting with them is definitely very healing. तो absolutely. अभी जाना चाहिए हम लोगों को बाहर, ऐसे एक्टिविटीज जहाँ पे हम उन लोगों को मिले जिनको हम जानते ही नहीं है। So, ले आए अपनी गेस्ट को, वो बेचारी थक चुके होंगे बैठे नहीं नहीं पीछे नहीं, बैठ के। इसीलिए तो मैंने ये हेल्थ के पॉइंट की तरफ लीड किया, ताकि जो हेल्थ है, कीपिंग योरसेल्फ इन गुड हेल्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एंड दैट कीप्स यू हैप्पी, राइट? राइट। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो भी हेल्थ से रिलेटेड है, आयुर्वेदा से रिलेटेड है, और उसके लिए हम अपने गेस्ट को लेके आते हैं, यस। वैद्य अर्चना वर्धान। हेलो। हाय Hello अर्चना। everyone. हाउ यू डूइंग अर्चना? I'm good. How are you all? Doing good, doing good. Beautiful day outside, Yes, it is. and the moment I came to know about the topic we are going to talk, I got so excited because मुझे बहुत कुछ सीखना है आज के टॉपिक से. So हाँ। let's start the discussion on that. तो यस। एक तो टचवुड 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 टचवुड, अच्छी बात यह है कि हमारे मास्क उतर रहे हैं, वो I जो know. बहुत ही बुरी सी बीमारी थी जिसका नाम भी मैं नहीं लेना चाहता, होपफुली आउट ऑफ द विंडो हो गई है, गायब हो गई है। पर उस समय एक शब्द जो बहुत यूज हुआ है, उससे पहले भी होता था, उसके बाद भी होगा, पर उस समय बहुत ज्यादा यूज हुआ है, द वर्ड इम्यूनिटी, टू हैव अ स्ट्रांग इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी के बारे में सबके कुछ ना कुछ ख्यालात हैं। तो आपके हिसाब से आयुर्वेदा और इम्यूनिटी का क्या है, कनेक्शन है, और किस तरह से इसको फॉलो करके हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं? Thank you, Rajiv ji and Ritu ji, for having me on this show. So, yes, this is the topic very close to my heart, and I can talk like for hours and hours. Yes, immunity has always been there, but I think with this COVID thing, this has become a kind of a very popular word, and people are kind like there are so much information on WhatsApp and Facebook, so it's all bombarded, so people kind of get confused like what actually we have to do to gain this immunity, because basically it's the root, it's the strength of our body. If it is good, we are good. If immunity gets depleted, or if immunity gets decreased, or immunity somehow gets hampered, we get attacked by diseases, and there are so many pathologies which develop in our system and which lead to us, and COVID is one of the thing. Like this entire universe, I would say everybody was affected, but some were severely affected, some were not severely affected. This was all due to a person's own immunity. So in Ayurveda, it has been described in very detail in Charak Samhita and Social Samhita. So I'll not talk about like the academic aspect. I'll just talk about the practical aspect, what immunity in Ayurveda means. So in immunity in Ayurveda, we don't call it immunity. It is called as Vyadhi Shamatva. So if we break these words into two, Vyadhi and Shamatva, so we can also, just kind of comprehend. Vyadhi means disease and Shamatva means resistance
to fight the disease. So basically, the resistance to fight the disease or resistance to overcome the pathology which is having in our body is nothing but the Vyadi Shamatva or immunity. So it has like it has a wide horizon. uh, Basically in our body it acts in two aspects, like in curative aspect and preventive aspect. So preventive aspect is like when we are attacked by certain viruses, bacteria, or any foreign particles or pathogens, and even like something building in our system also, which we will talk in detail today about gut health. So if our immunity is good, then we are kind of not affected with the disease. So this is preventive aspect. Then second is the curative aspect. If you are getting diseased or if you get disease, you have to come out of it. If, for example, let's take the example of COVID only. If COVID happens, we have to come out from that COVID thing. So that is the curative aspect. So immunity plays two roles, preventive and curative. If both, like if our immunity is good, if our body resistance or strength is good, we kind of get out of it very easily in both the terms. So everybody is talking about immunity, how this immunity is attained, how can we have this immunity. So everything is related to our digestive system, right? So if we are eating good, we are what we eat. And in Ayurveda, like it is a big tagline, food is the medicine. So Mhm. whatever we eat is whatever we are getting into our body. For example, like we are in sync with nature. Whatever is there in the universe is there in the system. We all know about those five pancha mahabhuts, right? Earth, like Prithvi, Akash, Vayu. Like these are all five, like Akash, Vayu, Agni, Jal, Prithvi. These are all five tattvas. So this body and the entire universe is made up of these five tattvas. So we have to go in sync with the nature. That is why Ayurveda has come up with certain aspects like Dinacharya and Ritucharya. So Dinacharya is daily regimen which we have to follow, and Ritucharya is a seasonal regimen which we have to follow. So like it's a very interesting science. If we follow the principles or bring little changes in our life, like following the daily regimen, which is not that hard. It's just that you have to be mindful and keep your mindset ready for that I have to stay healthy. If this aspect is in your mind that you have to stay healthy, you will get rid of all those things which will affect your health or which will affect your body. For example, you will, if you know that pizza, for example, is not giving any nutrient to your system, you will definitely not eat it once your mind is working on it. So this is बिल्कुल all what immunity is. This is all what about, like, if your digestive system goes well, the metabolism, it happens into different stages. So in Ayurveda there's a term called as ojas. So ojas is the essence of metabolism. Like whatever food we are eating, it breaks down into different steps, and the ultimate resultant which the body has is ojas. That is a nutrient which is absorbed by our tissues, which is absorbed by our body. So if we are eating good, the ojas which we attain is good in quality. If we are not eating good, the metabolism of the food which is happening will result into a poor ojas. So the essence, we have to decide what essence we have to give our body, good essence यस or bad essence. So, या Arjuna, तो अर्चना मतलब देखो मैंने तो अभी कोविड मतलब ओमिक्रॉन मुझे हुआ ही था और उस वक्त जैसे तुम कह रही कि हमें उससे निकलने के लिए मतलब क्यूरेटिव चीजें, तो मैंने उससे पहले कभी मल्टीविटामिन्स वगैरह पे उतना मतलब मैं खाती नहीं थी, बट मुझे लगा कि नहीं, फॉर द टेम्परेरी मुझे ये विटामिन्स खाने हैं, तो मैंने जिंक और ये मल्टीविटामिन शुरू किए। इतनी सारी सब्जियां मैंने और खानी शुरू कर दी, गर्म पानी पीना शुरू कर दिया, और समहाउ मुझे लगा कि वो 2-3 हफ्ते की वीकनेस तो थी, बट उसका मुझे कोई भी लिंगरिंग इफेक्ट नहीं रहा, बिकॉज आई टुक केयर ऑफ माई डाइट। so I agree with you, Ritu. Agree with you, Archana, and I try to follow the similar kind of thing. But at the same time, एक जिंदगी है यार, कभी कभी तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा खाने का कभी मन कभी करता ही चलता है, करता लाइक है। इफ यू आर मेंटेनिंग अ गुड लाइफस्टाइल, उसमें चीट डेज अलाउड है। पर वो बहुत सारे चीट डेज में से एक गुड डे होगा तो वो इट वोंट गिव यू दैट बेनिफिट, राइट? या मेरा तो कंट्रोल आ गया है। मैंने तो सोच लिया इस पूरी जिंदगी में मैं अब कभी भी कोई भी जंक, मीठा, पिज्जा, इस तरीके का कुछ भी गलत नहीं खाने वाली हूँ, बिकॉज फीलिंग गुड इज एनी डे। और अभी ये वैक्सीन और इनके जमाने में जब मैंने सोचा ही हुआ है कि अब मुझे कोई बूस्टर नहीं लेने हैं, इफ जस्ट बाय स्टेइंग कंसिस्टेंट और
खाना क्या है, लोगों से मिलना, एंजॉय करना, ये दिस है, वो होने चाहिए हमारे। मेरा भी खाने के ऊपर से ना, मतलब आई हैव अचीव दैट सेल्फ कंट्रोल। That's awesome. That's awesome, Ritu, because that's one thing that I have to get to. क्योंकि कभी कभी कहीं पे पिज्जा की स्मेल आ जाती है तो आई जस्ट फील लाइक नहीं यार, एक स्लाइस तो खा ही लेते No, हैं। नहीं, usually, you don't, कहते हैं ना अपनी इंद्रियों को, you don't starve yourself, because then also it gives a negative effect to your system. So eat. You have to live a life. You get one life. Endeavor in like या indulge in those बट unhealthy हम habits. अच्छी चीजें हैं, जैसे मुझे घी को देख के क्रेविंग होती है कि रितु तुझे अभी एक कटोरी घी पीना है। जैसे मैंने कल घी बनाया था तो आई ड्रैंक द वन, छोटा मैंने एक कटोरी पी लिया उसको। Good. तो मुझे स्वीट पोटैटो के लिए क्रेविंग्स होती हैं। इट्स ऑल इन द माइंड यार, हमारा माइंड जो एक बार सोच लेता है ना, फिर आप वही करते हो। मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग मुझे फॉलो करें, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट आई हैव अचीव्ड। चित्रा का एक क्वेश्चन है, अर्चना, आई हैव रेड दैट इफ यू आर eating according to Ayurveda, you don't need multivitamin supplement. Is it true? यस, It is true to some extent, but there are certain vitamins which we have to take externally because they are not produced directly, I would say, in the body, or the absorption is not that proper. राइट, For example, like vitamin D. So the if you're not like in US, like there is, you cannot get directly from the nature because most of the time weather is so cold or it doesn't permit, so the absorption is not proper. So vitamin D supplement is something which you have to take from external राइट, sources. But yes, if you maintain a healthy lifestyle, healthy dinacharya or healthy regimen, you won't need like rest of the multivitamins. Like, people are like half of their diet is made of those pills, so please come out of that pills, develop a healthy eating habit. बिल्कुल बिल्कुल। Makes sense. Makes sense. और ज्योति भाटिया बोल रही है, आर्यन, वी कैन हैव गोलगप्पा पार्टीज। हाँ श्योर। और मैं आप दोनों को बता दूं, ज्योति भाटिया जो है वो एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने जो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की है और जिस तरीके की वो मतलब हर रोज एक्सरसाइज करती है, और आई थिंक उनका जो वर्क प्लेस है वो भी काफी डिमांडिंग है। पर मैं मतलब मुझे उनके लेवल तक पहुंचना है। उनकी जो मसल्स देखोगे ना आप, इट्स लाइक यू विल फील प्राउड ऑफ व्हाट शी हैव अचीव्ड, एंड शी इज रियली रियली इंस्पायरिंग, वेरी पॉजिटिव पर्सन। और वो कम्युनिटी के लिए भी और मतलब नीडी लोगों के लिए काफी करती हैं, मतलब उनकी ड्राइव्स करती हैं खाने के सामान की, इन सब चीजों Good की। तो applaud. Yeah. शी इज अ वेरी पॉजिटिव एंड व्हाट एन इंस्पिरेशन। एंड अगर वो गोलगप्पे खा सकती हैं तो मुझे भी गोलगप्पे खाने हैं। और आई डोंट माइंड Yes. ईटिंग गोलगप्पा विद ज्योति। तो गोलगप्पे की बात हो रही है एंड ज्योति इज थैंकिंग यू। सो अर्चना, जब गोलगप्पे और ये हेल्थ की बात हो रही है और सब कुछ जाता है हमारे पेट पे, करेक्ट, इट कम्स डाउन टू द गट। सो गट हेल्थ और इम्यूनिटी, उसमें क्या रिलेशनशिप है, किस तरह से उसको बिल्ड कर सकते हैं? आई वांट टू लर्न मोर अबाउट द गट हेल्थ बिकॉज वी ऑल वांट टू मेक श्योर कि हमारी टमियां बाहर नहीं निकल रही हैं, हमारे टी शर्ट से बाहर नहीं निकल रही हैं। वी आर मेंटेनिंग अ गुड stomach that digests our food properly and maintaining that healthy lifestyle. So how do we connect those two together? So this is a very interesting thing, Rajiv ji, you were asked. Like immunity and gut health are directly related to each other. If gut health is good, immunity is good. Like Ayurveda has always said that amasya, like the stomach, is the root. Like is basically every disease origin from there. Rog utpatti happens in the samasya only. That this is the main, I would say, the seat of the body. And even like Hippocrates has said, and modern sciences have also accepted that all diseases begins in the gut. So we don't basically pay attention to our gut unless it calls for it. Like in we have stomach pain, we have acidity, we have heartburn. Otherwise, we completely ignore our digestive health, which is prime important. We should be paying prime importance to it. So, Rajiv ji, can you share that picture and so that I Yeah, can sure. tell in detail like how? So this is a picture taken from the web, and it is for like pictorial description only. So हमारी जो gut line, our intestinal lumen is very tight, very intact. There are no spaces in it because it allows only certain particles to go into it, and that's the way to maintain a healthy a healthy lifestyle. But when due to certain factors, it can be bacteria, it can be allergens, it can be toxins, it can be like we take a lot of antibiotics,
Stress is one of the factor. So what happens is that this intestinal tightening, you can see the junctions, they get open, which, and from that the toxins, they kind of get starting into our blood. They go into our blood, they go into the lumen, they cross the intestinal permeability. So leaky gut is what is called as, nowadays, it is nothing that the gut is leaking. It is what the junctions, they get open, and all the toxins start entering into the blood. Now Yes. you can imagine when the blood, which is full of toxins, Toxin. it will go to several organs. It will go to liver, it will go to so many organs, and it will create a pathology. So basically our gut microbiota plays a very important role. It tells us we'll be obese, it tells us whether we'll have autoimmune diseases, or it tells us whether we have skin diseases also. So our body is, Rajiv, you can take up with a slide so we can now talk about what gut health is. So our gut is made up of trillions and trillions of bacteria. I mean, this microbiota, what we call it in general. So these microbiota basically healthy, they mean the healthy environment in the stomach. If the microbiota for some reasons they are not properly fed, or if the population of the microbiota in the system start decreasing, we tend to have lot of diseases. So just for information, I would like to tell that this gut, there's like two neurotransmitter, 90% of serotonin and 50% of dopamine. So I will just like to know that, will tell you that, what serotonin does. Serotonin is a natural mood stabilizer hormone. It helps in bringing down your anxiety, it helps in bringing down your depression, it helps in maintaining bone health. And 50% of dopamine is produced in our gut. So dopamine is nothing but it plays a role how we feel. It's a basically mood driven behavior is controlled by dopamine. So now you can imagine like these two important neurotransmitters, they are produced by our gut, by our digestive system. So if our gut health is not healthy, what will happen? These neurotransmitter, how will they affect? They will affect our mood. They will cause a disease called as Alzheimer's disease also, because this gut is directly talking to our brain. There's a constant connection going on. So it is a tagline which is also said that heal your gut and heal your brain. There's a vagus nerve through which the information is going up and down. So Yeah. if this layer of this intestinal permeability is breached because of any reason, I've told you so many reasons, right? So if it is breached, or if we are not eating healthy, like our diet should be diverse, because there are diversity of I would say microbiota, microbes in our gut health. They need to be fed, because if they're not fed properly, they start eating the lumen of the intestine. So if somehow they start eating also, then also there will be a breach created and a permeability created, with which the toxins will start entering into into our blood. Bloodstream. And in Ayurveda also, it is related that when a digestive system, which is related to Agni, the digestive fire, if it is not good, the digestion is hampered. So the metabolism, which has to go till the end to create the essence called as ojas, it stops in between, because either the digestive fire is not good, or the gut microbiota are not working on in it properly. So the food, it stays undigested over there, it gets unfermented and everything, and that toxin or that metabolic waste which is created is called as ama. So that also affects our immunity, because it kind of lines the intestinal layer. So the Yeah. absorption of nutrients is not proper, because if there is a coating, if you can just imagine this lumen which is already lined by a certain sticky substance, so Right. something has to be absorbed through it. So it delays the absorption, or it hampers the absorption of the nutrients, and in turn it decreases our immunity, and our immunity is hampered. So Right. that is why our gut health is very important. So how can we know like how our gut is unhealthy? So there are few things, like if you have like chronic episodes of stomach discomfort, not the acute ones, if it has gone for a varied period of time, like you're having constipation, you're having acidity, you're having heartburn, or for instance you're having like on and off diarrhea and constipation,
Then there are unintentional weight changes, like without adapting any lifestyle or without doing any weight exercise, you are having fluctuation in your weight. Then please think of your digestive health. Third is like you add like or like you develop like excessive sugar cravings. So it can be for any reasons, like there is a lot of production of yeast in your gut health, so which are kind of wanting more sugars, you develop more exceptional sugar cravings. Then yes, I told you that when the toxins they start leaking into our blood, so whichever part of your system is weak, it can be your thyroid gland, it can be your liver, and it can be your skin also. So we start developing skin problems like eczema, we start developing psoriasis. And then yes, gut and brain are important. People nowadays are paying attention, but not that, but mental health is also important. Okay. Because if mental health is not good, you cannot have a healthy body, or you cannot have a good physical health also. So in short, I would say that it is very important to maintain gut health, because it is the main kitchen of our body. Like the kitchen of our house is the like kitchen in the house is like where the food is produced, and that is what is given to the rest of the family members. In the same way, it is the kitchen, or it is the main part of your body, so we have to really keep it healthy. And it starts from eating healthy, keeping the digestive fire intact, and yes, diversity in food. Diversity. So, so those three solutions you gave towards the end on maintaining the gut health. So, can you expand a little bit more on that? It's like Sure. uh, if we do, either we have issues or even we may not have issues, but we want to maintain the good gut. Uh, what is the good path forward? Is it only food or any other regimen which will help us maintain the gut health? So, in Ayurveda, like we talk about three basic pillars: Ahar, Ridra, and Brahmacharya. So, Ahar is the food we eat, Nidra is sleep, and Brahmacharya is celibacy. So over here, celibacy is like controlling your indriya, the controlling your basically your body things like requirement. So we will talk more about like ahar and uh, nidra, like sleep. So the food which we have to eat, there should be a diversity of diet. So in Ayurveda talks about six tastes: madhur, amla, lavan, katu, tikta, kashai. Sweet, sour, salty, bitter, pungent, astringent. So our food, like when we say a balanced diet, our plate should be composed of these six tastes, because it gives diversity to our bacteria, and it gives diversity to our system also. Second is like if somehow you get trapped with unhealthy gut, or you see that the symptoms are arising in our system, so we can have probiotics and prebiotics. So probiotics are which have live bacteria in it, Mhm. and prebiotics they don't have live bacteria. So why to go outside? There are tons of probiotics available. I would say go in your kitchen and find those prebiotics. The best and the healthy probiotic is your yogurt, Correct. naturally cultured, which has lactobacillus in it. Second main is your that kanji, the kanji which is made. So only thing is that you cannot have in summers because it is really heat producing. So you can have in your winters, or during this season also you can have kanji. Then if you need kefir also, and you can have like in the from the market also, there is one probiotic available which is called as Yakult. Yeah, So cool. Yeah. Yakult is good because there are a lot of probiotics available, but make sure like it doesn't have sugar content. Please read the labels behind. And then there is prebiotic, which is we can and also like banana also, it has inulin in it. And the prebiotics will be banana, even your rice, your potato. And I forgot about the probiotic fermented foods, the idlis and dosas, those are also Right. fermented, and they have good probiotics in it. And when we talk about food, we have to talk about exercise also. Hmm. So in like I was listening to Rajiv ji, he mentioned about the physical exercise. So yes, we have to do exercise, but we have to decide like what our body constitution is. In Ayurveda, there are three different types of constitution. Vata, like Vata, Pitta, and Kapha is divided into different prakritis. So there are six prakritis in general and three mental. But we'll talk about physical prakritis. So we have to decide what prakriti we are, because the exercise is also decided according to it. Like some people, like they are
For example, I would say Vata people, right? Those who are Vata dominant people, they should not indulge more and more of very rigorous or physical activity, because it will kind of aggravate Vata, which will create another imbalance. Then, for physical exercise, rigorous exercise is good for the people who are Kapha in nature. So, Oh, I mean, What does that yes. mean? What does that mean, So Archana? Vata basically, it's a constitution Like which काफा has. भी जो पहले बोला वो भी उसके बारे में भी like I'm trying to relate myself in the same So Vata, picture. Pitta, and Kapha, I mean, it's a very vast topic. I would just say that people who have air element dominant in there, they are prone for Vata constitution. People who have fire element in them, they have Pitta constitution, and people who have water element. So these Kapha people, they are more like, I wouldn't say obese, but they are happy-go-lucky type of people. Vata yeah. people are kind of more people who are in always in rush. They have intense energy in them. And Pitta people, I would say, since it is fire, they're the fiery element is dominant in them. They get fired. They get anger is like their and they are like a typical type A personality. So I hope, Rajiv ji, like I have given a little description of what Vata, Pitta, I and was trying Kapha. to put myself कि Yeah, कहाँ पे yeah, हूँ. yeah. I am Vata. I am Vata. My husband is Kapha. Okay. Yeah, so Kapha people are like, easy going, Yeah, chal that's raha what hai, aaram se karenge. Vata people are always in rush. Like they're constantly, because air is constantly moving, right? So they're moving. constantly, the thought process is like burning, churning, ko chalta rehta hai. Pitta people are, they are kind of like a typical, जिससे वो जो aggressive boss होता है ना, that if a straight line is drawn, so you have to walk in straight line, no here and there. So those are like the typical Pitta people. But combination भी होता है because Yeah, there are I feel that I'm a combination combination होता of, है Pitta, because Pitta I'm का. not at all a Kapha person at all. बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन I'm majorly Vata and little bit of Pitta. So ideally, like the constitution is always made up of two elements: Vata, Pitta, Pitta, Kapha, Kapha, Vata. And those who have like three all in balance, like Vata, Pitta, and Kapha, that is called Samprakriti, which is rare to find, because that is not usually fine. But usually we have a combination of two doshas, like Vata, Pitta, and Kapha are called as doshas. So our Prakriti is also based on. So we have to eat according to our constitution, work according to a constitution, and act according to a constitution, because even like the digestive fire also in our body, also these systems are going on, these are bioenergies flowing. So we have to keep a balance of this. Pitta basically regulates our digestive system, and Vata regulates our central nervous system. Basically you Yeah, can thought. relate to central nervous system. And Kapha is, since it has more earth and water element, so whatever density or whatever gravity which we get, it can be in form of your the hormones which are produced, or the fluid which is there in our the outer lining of our lungs, in our joints, in our brain, cerebrospinal fluid, pleural fluid, or the synovial fluid, Right. that is all controlled by Kapha. So now you can imagine like how this science is so good, and scientifically, like if you relate to it, how it is important and why it is important to maintain a balance. I think Rajiv ji Okay. is getting a little confused. So may No, I no, know I'm not what confused. confusion is? No, 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 no. I'm not confused. I'm not confused. What I was thinking, to be honest, inside me, what I was kind of processing was, कि मुझे, I have never gone into the whole Wafa, all this thing to understand Vata, who Kapha, Pitta, I am. huh? Yeah, but what I've done, I love to work out. I love to run. I love to do weights. I love to be happy. I I love think to I eat. think you are in balance. तो, तो बिना जाने वो नहीं, तो इसलिए मैं बैठ के सोच रहा था कि मैं कहाँ पे हूँ, हाँ क्योंकि नहीं, मुझे जो लगता है राजीव का कफा तो बिल्कुल भी नहीं है. No, he is अ, Kapha dominant. I am हम्म? not dominant. So the kind of personality which I can see is like, so Kapha people are not important, like necessarily they are obese or they are heavy builded. They can be slim build because they are maintaining themselves by doing exercises. But the kind of personality Rajiv ji has, he's happy go, shant, there and everything. So that is an attribute of Kapha feature basically. But then I am also a type A personality. It's like, So you नहीं are नहीं, क्या कहते हैं, you are a combination of. I know राजीव, ऑफ कोर्स ही इज नॉट कफा, ही इज अ So he मिक्सचर can be ऑफ. Pitta Kapha, मुझे लगता Pitta है dominant Kapha ये पिता personality. और ही इज मोर पिता एंड लेस वता.
या गुस्सा नहीं आता मेरे को, गुस्सा तो एकदम नहीं नहीं, आता मेरे गुस्सा नहीं को। होता, बट टू बी इन कंट्रोल So that वो you have, I think, ही हैज इट है। encountered, or I think you have basically उसको train कर लिया आपने अपने हाँ, mind या को. पीपल मास्टर ना, ऐसा तो मतलब Yeah. कर ही लेते हैं ना। So, but going back to the exercise, then I'm okay if I'm running 10 miles and things like that, या doing या my weights and So, all those kind of things, right? Rajiv ji, like when we talk about exercise, in Ayurveda, like there is a tips. There are 6 seasons basically mentioned. So we will talk about, like, there are few seasons which promote strength, and there are few seasons which deplete strength. So basically, when there is spring happening, the राइट, spring, summer, they are and a few portion of, like, I would say spring and summer, they are the seasons which deplete, there's depletion of strength happens. Digestive fire is low. And plus, since so we have to act and eat mindfully by knowing that digestive fire right now is slow. So Mm-hmm. either we develop habits or eat the foods which stoke the digestion. This is also an important factor. And coming to the another point is, like, kapha, this spring season is also a kapha season. So we are transitioning from winters to spring, and we are, like, in winters there's a natural tendency to eat more, heavy foods. So that when this transition is happening, when we come into kapha phase, so when the spring is arising, the kapha starts melting. So this kapha season is the best time to do vigorous exercises. Like, for vata people, they can do extensive yoga. For pitta people, they can indulge into whatever, like weightlifting, running. And kapha people, they can do excessive, like gymming and whatever exercises. So this is the best time to do your exercise, reap the benefits of this season, because kapha season is ideal for doing excessive and vigorous exercise. Makes sense. Makes sense. Yeah, I totally relate with that. I totally relate with that आई because थिंक हमारी बॉडी हमको डायरेक्ट करती है We have to ऐसी। listen, we have to be just mindful. And we अब start, see, nature, this COVID has taught, like, if we play with nature, nature comes back to in a very violent phase. So we have to really work in sync with nature only. बिल्कुल बिल्कुल। और तुम क्या हो, तुम अपना तो बताओ, कौन सी I'm टाइप a हो तुम? vata pitta person. ओके, तो Typically ये vata तो dominant. बेसिकली यहाँ पर सारे वाता पिता वाले ही हैं, तीन तीन। थैंक गॉड कि सुनील घर में कफा है, एंड आई कैन सी हाउ वी बैलेंस आउट ईच अदर। Yes, yes. वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत कुछ सीखा आज मैंने अर्चना तुम्हारे इस सेशन से। दिस वाज I mean, अरे Rajiv, there is so much नहीं, और to नहीं, talk मैं ये about. एक चीज ऐड करना चाहूंगी लास्ट शो के बाद से, जो मुझे पता थी, लेकिन अर्चना ने री इन्फोर्स किया कि चाहे मतलब कोई भी आपकी टाइप है, बट टू स्टार्ट योर डे विद वार्म वाटर बेसिकली सेट्स योर सिस्टम फॉर द डे। मैंने True. छोड़ दी थी तो माई एसिडिटी केम बैक फुल फ्लैश। तो जब से इसने मुझे बताया, और इसने मुझे कुछ सब्जियां बताई कि स्टार्ट ईटिंग दैट, एंड उसने मुझे फैनल का भी यूज बताया, आई थिंक उसके बाद से मैंने मेडिकेशन नहीं ली है। Because our body, it works at optimum pH. That pH level is more towards the warmer side. So if you start your morning with cold water, so what will happen? You are basically, कहते हैं ना, वो एकदम गर्म आग को आप बुझा रहे हो पानी डाल के, ठंडे पानी से. So that बिल्कुल। digestive juices, the system gets slowed down, and your the start of the day is, like, in a very bad form. या तो मैं जो लोग भी मतलब प्रोटोनिक्स प्राइल मतलब जो भी लेते हैं, मैं भी लेती थी, बट सच में बता रही हूँ, मैंने इतने लोगों को बताई है ये गर्म पानी वाली बातें। मैंने मतलब ये चीज अगर कोई कंसिस्टेंटली इसको कर सकता है तो उसकी एसिडिटी विल बी मैनेजेबल। And Rajiv ji, like, I think I want to share one thing, like, it can be off topic also. In my neighborhood, there was a lady who went through a complete hysterectomy, like her complete uterus was removed. ओके, So my son and, like, her daughter, they go into same school. The bus stop, like, we spoke about that thing. And unfortunately, what happened, her husband got COVID. So he went into the hotel, and she was all alone. So when she came back from surgery, there is like, over here in modern sciences, there is nothing called as diet, or nothing called as कि ये लेना नहीं है. She was drinking cold water, and she was having so many issues. So I went to her, like, I was kind of helping her. So I made a decoction of, like, certain herbs, and I advised her not to take cold water. So imagine, I can just share the message she has. She texted me, like, she had issues with passing gas, passing bowels. So the decoction I gave, and then she gave a strict instruction to her family members that she will only drink warm water, no cold water.
Right. and she happened to pass very smoothly from her post surgery effect. So these are certain changes Yeah. which we have to adapt, and we have to realize, like, in modern science there is nothing called as diet. Even the gastroenterologists, they don't agree with the thing that IBS or these chronic health issues are related to digestive, food is something which is a concerning factor which we have to take care of. True. And these are such small things, Archana. Like just to get that, first of all, get that information. ज्ञान जो है Yes, जो मिल रहा है, और सुबह गर्म पानी पीना, right? To make that as a regimen, it's a very easy regimen. It's not a exactly. difficult regimen, but it's Ri- so helpful to have that regimen, because Right. So, I do the same thing like Ritu, as you're saying. I made it like a point every morning to have a hot water kind of thing, and लेमन so डाल के उसके साथ, Yeah, and you it can add becomes like a certain habit. herbs. Yeah, according to yeah. Yeah. season, there are so many herbs advised. You can just start having that through a decoction. Like, you तो have to अब really तो work बता ही hard दो ना, getting it. बता दो ना वो जो डिकॉक्सिशन जो भी So, whatever you were so saying. CCF tea is basically, the ideal tea, cumin, coriander, and fennel. One Okay. fourth teaspoon of it, just boil it in water and reduce it to half and drink that water daily. Okay. It is a magical formula. Ignite your system, ignite your digestive fire, and keeps you healthy like throughout the day. Even the Perfect. metabolism is also Yeah, kept even in you check. can add ginger, right? You can add Yes. ginger into So it. there are issues with ginger, like people who are more like have acidity issues or who have acne issues. They should avoid ginger because Yeah, ginger it I has a totally healing stopped element in it. for the Yeah. last few years. हमारे घर में जिंजर आता ही नहीं है क्योंकि मैंने जब से जैसे जिंजर को हटाया मेरी एसिडिटी हैज इम्प्रूव्ड like lot. Yes. Yes. Like there are few small changes if you bring in your life, they transform you in a huge way. Yeah, and I can see like Chitra is saying, Jyoti is saying, many others are saying, who have been able to give away on medications by just Right. following the simple Ayurveda path uh, of I food was and diagnosed care. with borderline hypothyroidism. My thyroid TSH was high after my pregnancy, and the doctor gave me 3 months to monitor it. And I made sure कि मुझे pills पे नहीं जाना है. I completely followed the diet, the regimen, and even the Ayurvedic tips, and my number came from 6 to 2. तो आई थिंक इसके ऊपर तो एक शो हमको अलग से करना पड़ेगा, हाँ, हाउ टू करना कंट्रोल द पड़ेगा. हाइपोथायरॉयडिज्म, So it बिकॉज is a very माय important topic. Yeah. हाँ, तो वो उस पे तो करेंगे यार। कितना कुछ मतलब पिछले शो में इतना कुछ जानने को मिला था अर्चना से, आज भी हम इतना कुछ सीख रहे हैं। Thank तो you. अभी मार्च आ गया है, स्प्रिंग इज हेयर, तो अभी फिलहाल के लिए कौन सा खाना हमको खाना चाहिए अर्चना? So, before I talk about the spring Ritucharya, I want to share information about Ritu Sandhi. So, Ritu is the season and Sandhi is a junction. So, when you are transitioning from one season to another season, there is a time period which is called as Ritu Sandhi. If we take care of that particular 14 days, like ending 7 days of the current season and 7 days of the like the future season which is coming, that 14-day period is called Ritu Sandhi. If we keep a track and if we start adapting slowly, like leaving the habits of that season which we are into and adapting the seasons which we are entering into, we will not get trapped into seasonal allergies. We will not get trapped into like cold and flu infections which are prone in like spring, also pollen allergies, and we must have said that, right? Like हमारे like old people के आती जाती सर्दी पे ध्यान रखना चाहिए. Like end of the season में ज़्यादा you are more prone to infections, because that junction, if you take care of, it helps in basically conquering the health in the next season you are following. Now, since we are entering into spring, which is starting from 20th March, so I think it's good that we just shared about this. So this 14 period, we should be really careful. Like we should stop eating or stop like reducing the habits which we had in winters and start gaining the habits which we want to have in spring. So in spring, I just said that strength is depleted, digestive strength is depleted. So eat light, don't eat a lot of heavy food, or don't eat a lot of oily food, I would say, because it diminishes the digestive fire. Include taste which are rich in bitter, pungent, and astringent. Avoid sweet, sour, and salty.
Sweet is something which aggravates kapha, and people who have kapha constitution, they should be really careful. And since we all have kapha element in us, so we don't get that kapha element to get out of balance. So we have to keep that also into balance. Avoid sweet food which are rich in sweet, sour, and salty taste. Use of honey is very good in this season. Avoid honey with hot water because it acts as a poison. Mm-hmm. Avoid honey in equal quantities, honey and ghee. They also act as a Yeah, poison. yeah. People say that you can like die if you consume And honey with then avoid having dairy with fish. Fish and milk are a contraindicated food which leads to skin disorders. yeah, Then in spring season is the best time to do exercises. Muleti tea. You can start using this muleti tea because it will help your upper respiratory tract disorder. And as Rajiv ji and we all know that Ritu ji, like the mask up, mandate has been uplifted. So we have to be really really careful because COVID has not gone. It is still there. It's just that we have to be careful. So there are natural things which we can do. Like in this kapha season, there is a term called as a therapy called as nasyam in Ayurveda, which is mentioned. It's a procedure wherein you put like oil in the in your both the nostrils. So there is called as pratimurshi nasya, which we can have daily. Anutelam is something I can just write in the chat, which is easily available. So Yeah, you can do since that. And many questions are coming up, Archana. So, So, but I just want to wind up. yeah, Anu yeah, yeah. Thalam, just put two drops in each nostril. It will help. And then try to do there's called a term called as oil pulling. So when you do that oil pulling with turmeric, or you can do it with, if your condition allows, you can do it with till tail or even with coconut oil. But this nasim, I would say that because the virus enters through the nasal cavity right. only, and it gets active and multiplies when it is inside the system, so you have to prevent that. So for instance, you are moving out, just put a coating of sesame oil and do that dropping of oil daily in your nostrils. It helps, Wow, it will help. These are preventative aspects. wow, wow. Yeah, Chitra was asking if possible, please tell us about smoothies. Yeah, Come. so yes, the smoothie, it has become so popular, but in Ayurveda, there's a strict no of mixing fruits with vegetables vegetables, because right. Yeah. both of So, them have a different level of digestion. Yes, yeah. avoid sour fruits with milk. And Like then, people have they are fond of making berry Ma'am, strawberry cake, so please make sure, like I would say, if you're eating it, see that they're not sour, because anything which is sour in nature mixed with milk, it cuddles in your tract. So if it is right, cuddling in your tract, it will start fermenting, so you will know right. that what will happen. It will block your or it will and even, like I would say, eating yogurt at night is also contraindicated in Ayurveda. Yeah, fourth और question. yeah, चलो. Go ahead, Ritu, go ahead. हाँ, मैं ये कह रही थी काफी लोग सैलड्स खा रहे हैं डिनर में, एंड एज यू टोल्ड मी लास्ट टाइम की सैलड खाने हैं तो लंच में खाओ, और थोड़ा सा ऑयल जरूर डालना चाहिए क्योंकि लोग स्टीम ऐसे ही करके मतलब खाओ शाम को, हाँ, अगर खाना हाँ, है तो. तो थोड़ा मतलब, तो दोज आर द टिप्स हर बारी. इस बार आई थिंक And फ्रॉम दिस, आज के सेशन से मैं ये जो ऑयल पुलिंग और का है, और ये जो नाक में सेसमे ऑयल लगाने का, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस. and then, eat according to seasons, eat which is locally available, which has always been said that. And just be mindful for what you're eating, because राइट, and always, like, there are few tips also. We should not eat when we are in rush, because when we are rushed, like, two systems are working in a system. If you are stressed, sympathetic system is active, and digestive system is controlled by parasympathetic system. So body can act only with one system. So if you are eating while stressed, so if your stress system is activated, the digestive juice, the brain doesn't send signals to secrete digestive juices. So whatever food you will be eating, it won't be digested properly. So when you are stressed, please just sit for a while, breathe in, relax, and then start eating. Leave everything when you're eating. Even like screen time is also not allowed when you're eating, because your focus, your brain is not working towards your digestive system. It is basically focusing on the screen. राइट, राइट. One more question. Mona Patel is saying, is turmeric oil drop in the morning with warm water good Yes, for it's health? well. Turmeric in any form is really good. And then
तुमने बोला honey and hot water, no, right? Yeah. No, no. You can have a little bit of lukewarm, but honey mixed with hot water, it breaks down and it acts as a poison in your system. Yeah, because we have been giving our boys that whenever उनका नाक को खराब होता था or something like that. So थोड़ा ठंडा गुनगुना करके you can have it, but not what very about hot. the kava? जो kava आता है in tea bags, teas and things like that in the hot water? You Because it just have has to all see. तो ingredients उसमें basically. honey तो नहीं होएगा because नहीं, honey honey नहीं है. Right. you can नहीं, have those. all the other ingredients are Yeah, there. you can have Yeah. those. और basically जो good होते हैं turmeric हुई, मुलेठी हुई, these are all good ingredients which we can incorporate. Like now we know we are entering into kapha season, we are entering into spring, so why not use like reap the benefits and start adapting a healthy way. And yes, Yeah. So sleep is honey. also. Yeah. So Jyoti is asking, what about brushing your teeth with coconut oil? I won't suggest because Yeah, yeah. there are you can do brushing with there are herbal toothpaste or whatever toothpaste you're having. And Lena is correcting me, honey brandy. So please And don't. don't. No honey brandy also. No And honey brandy, Lina. Honey with lukewarm is fine, but not with very hot honey water. with lukewarm is fine. I think that's what we had been doing. Honey with lukewarm. That is fine. That is And fine. Devendra, yeah. So he's basically giving lemon also. So yeah. No, you can. It's fine. So we are at the top of the hour, and I think कितनी बातें बाकी हैं मेरे क्वेश्चन तो अभी सारे खत्म नहीं हुए. So as you are saying, Ritu, हमें तो वापस आना पड़ेगा इस शो. I think let's do another show after this show. तुमने इतने सारे सवाल तैयार किए हुए हैं और अर्चना भी just as a join करना चाहती है क्योंकि आज इसने बड़े सारे राजीव ने questions तैयार किए हुए हैं. Yeah, I mean, I would just, ending the show, I would just say that please keep your gut health healthy because this is very important to maintain our brain health, our physical health, and most importantly, our immunity. Eat Right. according to seasons, exercise well because this is the best season to exercise. So जितना मर्जी जितना आप exercise कर सकते हो ना जम करके करना चाहिए because then when we enter into summer, we have to hold back half the capacity. And also when you're eating, don't eat to like full of a capacity. Leave 1/3 of your stomach, the air So, should be left so that the food like it has some space, space to churn. So don't eat like too full of your capacity. Always leave 1/4 of your stomach empty. actually there is so much to learn पर क्या होता है ना हर सेशन में आप थोड़ा थोड़ा imbibe कर पाते हो तो I think we should have अर्चना more frequently. हर I would बार love एक yeah. नए टॉपिक के साथ और जो भी ये शो देख रहा है या बाद में देखेगा तो आप अर्चना को रीच आउट कर सकते हो बिकॉज देन यू कैन हैव one point I left, like best time kapha season, like these days are also divided into vata, pitta and kapha. So the kapha time is 6 to 10 a.m. in the morning, best time to do, and 6 to 10 a.m. in the evening. But best time to do your exercise is 6 to 10 a.m. in the morning. And because the researchers have said that people who exercise in the morning, there is a drop in blood pressure, a very good significant drop in blood pressure when they sleep in the night. So when they exercise in the morning. So best time, kapha season, best time is 6 to 10 a.m. Yes. या तो मैं मुझे बीच में काट दिया अर्चना ने मैं Sorry, ये कह रही थी कि I भाई was like, I have to put this जिसके कोई सवाल हो तो आप अर्चना को डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हो बिकॉज शी इज रियली हेल्पफुल एंड शी हैज हेल्प्ड मी स्पेशली विद माय एसिडिटी सो आप और हम तो अर्चना को लाते ही रहेंगे एंड हर एक शो में हम भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं अभी अर्चना से थैंक यू अर्चना फॉर ऑलवेज विलिंग टू हेल्प मी जब भी तुम मेरी कुछ भी तबीयत खराब होती है यू ऑलवेज रीच आउट टू मी एंड यू ऑलवेज ऑफर द पर्सनल हेल्प थैंक यू I love doing what I'm doing. So thank you so much. Thank you. Thank you This so was much, Rajiv, great. and we love people who love what they are doing. Yep, exactly. And we love to have this kind of chit chat. It's informative. People love it. They're already saying, bring you on again. So हम लोग तो already set up है. नहीं अभी हमको एक थायराइड पे करना है और ऑफ कोर्स एक गट हेल्थ तो चलती रहेगी उसके बाद हमें ऑयल पुलिंग एंड ऑल दीज की लोगों के क्वेश्चंस रहेंगे कि किस तरीके का तेल वेल यूज कर ये सब मतलब most important is gut health because everything is linked to it. So keep your gut healthy. And I think Archana, Ritu, I think Ritu, you have seriously followed it, so I need to commend you for that. So no, she really has like so really proud of you, Ritu. Yeah. Really proud of you. नहीं मैं of course I'm working hard every day हर सुबह उठ के वो सब्जियों को काटना करना it requires a lot of dedication but I still have a lot to
achieve. Yeah, so what I would say अर्चना कि हमारे सभी सुनने वालों को भी मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे देखने वालों को कि we'll put up a regimen or something, कि Yes. Right. हमारे जो देखने वाले भी हैं उनके लिए भी एक काइंड ऑफ चार्ट बनाएं, प्रोग्राम बनाएं, ताकि हम Right. वो हमें रिपोर्ट कर सकें कि they have been following this, not just listening it but Right. following, जैसे रितु That's a कर good रही है, idea. Yeah. and see the difference in lifestyle that they will have after following whatever they learn through the session, and we'll bring them on. We'll have some of those people Yeah, join our and show. उसका नाम रखेंगे ना, Get Healthy with दिल से. हाँ, I know exactly. this is a good initiative. We are spreading. You are spreading happiness, and I would love to spread a good health. Yeah, यहाँ देखो, मतलब जो भी हैं हम लोग, ऑफ कोर्स राजीव भी बहुत अपना ख्याल रखता है, मैं भी रखती हूँ, और हमारे पास एक प्रोफेशनल गाइडेंस के लिए डॉक्टर हैं, तो फिर हमें और क्या चाहिए. exactly. And if that's what we will bring, and I'll tell everyone, we will bring on the guests. If you guys are going to follow the regimen, if you have questions, reach out, and we'll bring those guests over and ask them, talk to them, कि वो Yeah, they क्या will कर be the रहे हैं, क्या example सीखा. for Yeah, others. and Like somebody who has gone inspiration. through some serious disease and they have like cured, या कुछ मतलब कोई आके मतलब रियल भी मतलब जिन्होंने लाइफ में खुद से किया है, उसको भी हम एज ए गेस्ट ला It सकते हैं. will be तो an inspiration for others to follow Ayurveda. Exactly. या Exactly. बिल्कुल. या So, Archana, thank you so much. Thank you Ritu, so much, thank you Rajiv so ji, Ritu much. ji. It was a pleasure for me to be here. It has brought happiness for me today for sure. तो And it's a आज की जो beautiful तुम day. क्वेश्चन तैयार करके लाए थे, पूछ लो अभी, अर्चना से भी पूछ लेना ना. हाँ नहीं, वो अगले सेशन में जरूर पूछेंगे. I'll talk to her. You We'll have my bring. number. आप मुझसे ऐसे भी पूछ सकते हैं. You don't नहीं have to नहीं, come on the show. वैसे भी पूछ सकता हूँ, परंतु अच्छा लगता है हमारे सुनने वालों के साथ, देखने वालों के साथ शेयर करने में भी, because it spreads the information Right. across, and this program goes worldwide, as you know. So हमारे इंडिया में भी सुनने वाले, देखने वाले हैं, यहाँ पे भी हैं. So it is helping the overall mankind in maintaining a good health. Yeah. Right. Thank So you. Ritu, Thanks Thank you Archana. so much. Thank you so much. And thank you so much. thank you to all the viewers and listeners, because just be healthy and stay fit. That's the motive. Exactly. And the beautiful spring season is here. Cherry blossoms are going to be coming up. So maintain healthy, go and work out. As Archana said, this is the best time to work out as much as possible. Jump into it so that you can control back in the summer. And then when you put off your this thing, heavy jackets, you come in and transform like shape, right? Exactly, exactly. And I'm also looking forward to a transformed body in the summer. So thank you so much जो भी हमारे join किए आज. Hopefully you enjoyed the session. We'll bring Archana back with more informative information on Ayurveda and health. और सबको बता दूं, रितु तुमको बताया है कि हमारा शो, हमारा ड्रामा आने वाला है Three Sister on April 9th and 10th on Jewish Community Center. I will be putting तो it on. तनी, तो तुम क्या कर रहे हो उन थ्री सिस्टर्स में? थ्री सिस्टर्स में मैं इस टाइम, पता है रितु, ठीक है भाई, बात निकाली है तो आई एम नॉट गोइंग टू लुक एट द क्लॉक एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. पहली बार मैं विलेनिश रोल कर रहा हूँ. Oh Oh my wow. God. या तो मेरे दो कैरेक्टर हैं. वन इज वेरी फ्लर्टी बैड कैरेक्टर काइंड ऑफ अ पर्सन, एंड सेकंड इज माफिया सेठ. Oh, wow. तो दोनों विलन वाले कैरेक्टर हैं. सो आई एम गेटिंग अवे फ्रॉम माय गुडी गुडी बॉय कैरेक्टर, लवर बॉय So कैरेक्टर. basically, you're playing opposite of your personality. So, Completely, yeah. So it's going to be a challenge. So I'm taken on that challenge to perform. But it's not a significant role, but I'm enjoying what I'm very good. doing. All the best. So on April 9th Yes. and 10th. So देखने वाले कोई भी, if they're interested, please reach out to me to let you know if you want to come. I'll give you the information on tickets. और उसके साथ ही आने वाले हफ्तों में फिर से मुलाकात होगी. जाते जाते रितु, it's your birthday month. March, yeah, it's my birthday March, month. and your birthday would be See, coming up. मैं spring में आई हूँ, like season of hope, You bring change. flowers and hope. Yeah. Yeah. So we'll see if you're around and in the coming weeks as such. But आने वाले हफ्तों में और कुछ अच्छे अच्छे shows लेके आएंगे, दिल से विद आरजे राजीव एंड आरजे रितु. और ये जो हमारा हमारे दिल से आपके दिल तक का शो है, उसमें रितु उस शो में प्रेजेंट हो ना हो, पर हमारा शो हमेशा दिल से विद आरजे Yeah, राजीव, आरजे of रितु course, रहेगा. So definitely. आने वाले हफ्तों में फिर मुलाकात होगी. Have a fantabulous weekend ahead. It's going to be a beautiful weekend with beautiful warm weather. So start your healthy regimen of working out from this weekend itself, and follow the tips that we talked about for being happy. Make yourself happy from your heart.
It brings you a healthy lifestyle. Yeah, it's spring time. Make some new friends too. मैंने भी सोचा कि कोविड से निकलने के बाद अब हम लोगों से मिल रहे हैं, तो मेरा इस साल का एजेंडा यही है कि 8-10 नए दोस्त बनाने हैं. पीछे वालों की कुछ की छटनी हो चुकी है, तो हम नए ऐड करने हैं. Good, 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 good. Good to Let go of all Yeah, whatever is there the one and life, यार, one life. तो move on. Yep, move on. Okay, chaliye, everyone. Have a wonderful चलो, take afternoon, care. wonderful weekend. Bye. Bye. So